Hello my dear students, welcome to all in social science class once again. Dear students, in previous module we have studied about the progress of civil disobedience movement and reaction of different social groups towards civil disobedience movement. No doubt this movement could not be successful, but it paved the way for future struggle and unite all people together. Today, in this module, we will discuss more factors that helped in developing a sense of collective belongingness. You can also see in this picture how Tilak is surrounded by the symbols of unity. The scarred institutions of different faiths like temple, mosque and church frame the central figure. Dear students, let's see how this whole happened. When people took part in the movements launched by Gandhiji, then nationalism spread and people began to believe that they are all part of the same nation. They discovered some unity among themselves that bind them together. Now question arises that how did the nation become the reality in the minds of the people? How did people belonged to different communities, regions or language groups develop a sense of collective belonging? The students, this sense of collective belonging came through the experience of united struggle. Except this, there were also a variety of cultural processes through which nationalism captured the people's imagination. Factors like history and fictions, folklore and songs, popular prints and symbols also played a great role in the making of nationalism. So dear students, collective belonging की फीलिंग यानी सामूहिक अपनेपन की भावना यूनाइटेड स्ट्रगल के चलते लोगों में उत्पन्न हुई. इसके अलावा बहुत सारी कल्चरल प्रोसेस के थ्रू भी नेशनलिज्म लोगों की इमेजिनेशन और यू कैन से आइडिया ऑफ नेशनलिज्म लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया. हिस्ट्री एंड फिक्शंस, फिक्शंस मीन्स टू से लिटरेचर, फोकलोर और सॉन्ग्स यानी लोक कथाएं और गीत, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स सभी का नेशनलिज्म को बढ़ाने में ग्रेट रोल रहा था. Dear students, as we had discussed in chapter 1st, the identity of the nation is most often symbolized in a figure or image. This helped in creating an image with which people can identify the nation. In 20th century, as the nationalism grew, the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. The image of Bharat Mata was first created by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. सो द स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था ना कि किसी भी नेशन की आइडेंटिटी उसकी पहचान किसी फिगर और इमेज के थ्रू ही होती है. इससे लोगों को एक ऐसी इमेज क्रिएट करने में हेल्प मिलती है जिसके थ्रू वो नेशन को आइडेंटिफाई कर सकें. 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म की डेवलपमेंट के साथ भारत की पहचान भारत माता की इमेज के रूप में की गई और यह इमेज सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी. सो हियर वन माय क्वेश्चन इज, हु क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता? सो द राइट आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. In 1870s, Bankim Chandra wrote Vande Mataram, which is a hymn to the motherland. Later on, Vande Mataram was included in his novel Anand Mat. Vande Mataram was widely sung during the Swadeshi movement in Bengal. So 1870s में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम सॉन्ग मातृभूमि के गुणगान के रूप में यानी मदरलैंड के लिए लिखा था. बाद में इसे उन्होंने अपने नोवेल आनंद मठ में इंक्लूड कर लिया और फिर वंदे मातरम सॉन्ग बंगाल के
स्वदेशी मूवमेंट में खूब गाया गया था. सो स्टूडेंट्स, हु वाज द ऑथर ऑफ नोवेल आनंद मठ? Yes, the right answer is Bankim Chandra Chattopadhyay. And one more question here. By whom the song Vande Mataram written? So same answer is Bankim Chandra Chattopadhyay. Okay, let's move forward. Abanindranath Tagore was greatly influenced by the Swadeshi movement and painted his famous image of Bharat Mata. In his painting, Bharat Mata is portrayed as an ascetic figure. She is calm, composed, divine and spiritual. बेटा, स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की इमेज को पेंट किया, चित्रित किया, और इस पेंटिंग में भारत माता को एस्केटिक यानी एक तपस्विनी और वी कैन से सन्यासिनी की फॉर्म में दिखाया गया है. शी इज काम मीन्स शांत, कंपोज्ड मीन्स गंभीर, डिवाइन दैवीय एंड स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक गुणों से भरपूर मीन्स उसको ऐसे डिपिक्ट किया गया है. सो नोटिस हियर द मदर फिगर here is shown as dispensing, learning, food and clothing. The mala is one hand, emphasize her ascetic quality. बेटा ये जो मदर फिगर शो की गई है उसने अपने हाथों में यानी एजुकेशन, ये आप कह सकते हो शिक्षा, भोजन यानी फूड और वो कपड़े यानी क्लोथ्स दे रही है. हाथ में माला उसकी एस्केटिक क्वालिटी यानी सन्यासिनी गुणों को प्रकट करती है. बेटा, sometime examiner asks the question like, how is Bharat Mata visualized in this picture? So your answer will be, Bharat Mata is depicted as a mother figure shown in the picture as dispensing learning, food and clothing. Okay, let's move. In the following years, the image of Bharat Mata acquired many different forms and it was circulated in popular prints. Different artists painted the image differently. Devotion to this mother figure came to be seen as an evidence of one's nationalism. यानी बाद के वर्षों में भारत माता की इमेज कई डिफरेंट फॉर्म्स में प्रिंट होने लगी. इसे पॉपुलर प्रिंट्स में सर्कुलेट किया गया. डिफरेंट आर्टिस्ट ने इमेज को डिफरेंट वे से पेंट किया और इस मदर इमेज के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था और विश्वास के सिंबल के रूप में माना जाने लगा. इफ वी टॉक अबाउट द लेट 19th century India, our nationalist leaders began to record the folk tales which were earlier sung by bards, and they toured villages to collect folk songs and legends. The leaders believed that these old tales related to heroism gave a real picture of traditional culture that had been crushed and damaged by the invaders. So बेटा, 19th century के एंड में नेशनलिस्ट ने बार्ड्स यानी भाटों या कवियों के थ्रू गाई जाने वाली फोक टेल्स यानी लोक कथाओं को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और फिर नेशनलिस्ट ने फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स और वी कैन से जन श्रुतियों मीन्स लोगों के थ्रू सुनाई जाने वाली कहानियों को इकट्ठा करने के लिए वो गांव गांव घूमने लगे. उनका यही मानना था कि ये स्टोरीज हमारे ट्रेडिशनल कल्चर की रियल पिक्चर शो करती हैं जिसे इन्वेडर्स ने या आप कह सकते हो कि बाहरी ताकतों ने डैमेज कर दिया था. इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर began to collect ballads, nursery rhymes and myths. He led the movement for revival. So बेटा, हमने जो ट्रेडिशनल कल्चर को बचाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में खुद फोक टेल्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स यानी लोक कथाएं, बाल गीत और मिथकों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया. उन्होंने ट्रेडिशनल कल्चर को पुनर्जीवित करने के लिए या पुनर्जीवित करने वाले मूवमेंट की लीडरशिप भी की. इन साउथ, पर्टिकुलरली इन मद्रास, नटेशा शास्त्री published a massive 4-volume collection of Tamil tales known as Folklores of Southern India.
he believed that folklore was national literature and most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. So बेटे, मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल फोक टेल्स का कलेक्शन 4 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया। उनका ये मानना था कि फोकलोर एक नेशनल लिटरेचर यानी एक राष्ट्रीय साहित्य है और ये लोगों के रियल थॉट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स का सबसे विश्वसनीय और वी कैन से ट्रस्ट वर्दी एक्सप्रेशन है। डियर स्टूडेंट्स, with the development of national movement, the leaders became more and more aware about such icons and symbols which helped in unifying the people and inspired them with the feeling of nationalism. During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag was designed which included red, green and yellow colors. This flag had 8 lotuses which represent the 8 provinces of the British India and a crescent moon representing Hindus and Muslims. Students, जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप हुआ, लीडर्स ने लोगों को यूनाइट करने के लिए, उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग भरने के लिए इस तरह के आइकन्स और सिंबल्स के बारे में और ज़्यादा वो अवेयर होते गए, जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम एक ट्राई कलर फ्लैग भी डिज़ाइन किया गया जिसमें रेड, येलो एंड ग्रीन कलर्स थे। इसमें ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हुए ये लोटस फ्लावर्स और हिंदूज मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता हुआ क्रिसेंट मून रिप्रेजेंट किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इन 1921 Gandhi ji had also designed the Swaraj flag, which was also a tricolor, including red, green and white. This flag had a spinning wheel in the center. Spinning wheel represented the Gandhian ideal of self-help. During the marches, carrying the flags, holding it aloft, become the symbol of defiance and self-esteem. So 1921 में बेटा गांधी जी ने भी एक स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया था और ये भी ट्राई कलर फ्लैग था जिसमें वाइट, ग्रीन एंड रेड कलर्स थे और इसके सेंटर्स में गांधीयन सिंबल यानी स्पिनिंग व्हील और यू कैन से चरखे को जगह दी गई जो कि सेल्फ हेल्प का सिंबल था। जुलूसों में ये झंडा लेकर चलना अपमान का प्रतीक माना जाता था। Dear students, histories of ancient India also played an important role in uniting the people. If we talk about the end of the 19th century, then many Indians begin feeling that Indian history can be one of the major factors to instill a sense of pride in the nation. As we have studied in our previous classes that the British saw Indians as backward, as primitive, and they also thought that the Indians are not able to govern themselves. To change this thinking, Indians began to look into the past to discover India's great achievements. When they explored India's past, then they found that in ancient India, in ancient time, art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished. This glorious time was crushed by Britishers and our history began to decline with the start of colonialism. These nationalist histories helped the readers to heal pride in India's great achievement in the past and made them ready for struggling to change the miserable conditions of Indian people and country under the British rule. So बेटा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का भी लोगों को यूनाइट करने में इम्पोर्टेंट रोल रहा है। 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते बहुत से इंडियंस ये फील करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व की फीलिंग को जगाने के लिए
इंडियन हिस्ट्री को डिफरेंट वे से पढ़ाया जाना चाहिए। ब्रिटिशर्स की नज़र में इंडियंस बैकवर्ड और प्रिमिटिव थे। उनका मानना था कि वे अपना खुद का रूल भी नहीं संभाल सकते, और इस टाइप की थिंकिंग को चेंज करने के लिए इंडियंस ने इंडिया की ग्रेट अचीवमेंट्स को डिस्कवर करने के लिए अपने पास्ट को देखना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे ग्लोरियस एनिशियंट टाइम के बारे में लिखना शुरू कर दिया, जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड काफ़ी फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस ग्लोरियस टाइम को ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया और इंडिया को अपना गुलाम बना लिया। इन नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज ने रीडर्स को इंडिया के पास्ट की ग्रेट अचीवमेंट पर गर्व करने और ब्रिटिश रूल के अंडर जो इंडियन पीपल की मिजरेबल कंडीशन थी उनसे मुक्ति के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए कहा गया। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी फैक्टर्स which played an important role to unify the people of the nation. But these efforts to unify people were not without problems. When the past being glorified was Hindu, and whatever the images celebrated, or we can say painted, were drawn from Hindus' iconography. So the people of other communities felt left out. Dear students, let's conclude the chapter. As we have studied that there was an anger among the Indians against the colonial government, and this bring together different groups and classes into a joint struggle for freedom in the first half of 20th century. Under the leadership of Mahatma Gandhi, the Congress tried to channel people's grievances into an organized movement for independence. These movements try to forge unity, but we have also seen that different groups and classes participated in these movements with different aspirations and expectations because their grievances were wide-ranging. Freedom from colonial rule also meant different things to different people. Congress tried to resolve these differences and ensured the people that the demands of one group did not alienate the other groups. We have seen that the unity within the movement broke down due to different expectations. We have also seen that phases of disunity and inner conflict between different groups. In simple words, we can say that whatever was happening was emerging a nation with many voices who wanted freedom from the ब्रिटिश रूल। सो बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बढ़ता हुआ गुस्सा डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस को फ्रीडम के लिए, ज्वाइंट स्ट्रगल के लिए खींच रहा था। महात्मा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने लोगों की शिकायतों और परेशानियों की इंडिपेंडेंस के लिए चलाए गए मूवमेंट्स के थ्रू पूरी कंट्री को यूनाइट करने की कोशिश की। बट इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करने वाले डिफरेंट ग्रुप्स थे या क्लासेस थी, उनकी अपनी अपनी एस्पायरेशंस और एक्सपेक्टेशंस थी, मीन्स अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं थी। उनकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा थी। सो कॉलोनियल गवर्नमेंट से फ्रीडम पाने का भी सबका अलग अलग मीनिंग था। कांग्रेस ने इन डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए और यह इंश्योर करने के लिए कि हमेशा ये कोशिश की कि एक ग्रुप की डिमांड्स की वजह से दूसरा कोई ग्रुप दूर ना चला जाए, और कई बार डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस की वजह से, यानी सबकी अलग अलग डिमांड्स की वजह से मूवमेंट की यूनिटी खत्म हो जाती थी और डिफरेंट ग्रुप्स में डिसयूनिटी और इनर क्लैशेस की सिचुएशन बन जाती थी। इन ब्रीफ, जो नेशन उस टाइम एमर्ज हो रहा था वह कॉलोनियल रूल से फ्रीडम की चाहत रखने वाले बहुत सारी आवाज़ों का एक समूह था, एक ग्रुप था। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।